हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पीरा एक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वीडियो इंतहाई अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर नंबर 7, पब्लिक न्यूसेंस एंड इंक्रोचमेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेक्शंस अलाउज अ डिपार्टमेंट और विसल ब्लोवर टू रिपोर्ट पब्लिक न्यूसेंस? ऑप्शन ए सेक्शन 33, ऑप्शन बी सेक्शन 34 subsection 2, option C section 35 subsection 4, option D section 37 subsection 1। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी सेक्शन 34 सबसेक्शन 2। अगला सवाल है, who can submit a complaint regarding public nuisance under the act? Option A only the enforcement officer, option B any aggrieved person, option C only the board, option D only the government। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी any aggrieved person। अगला सवाल है, within how many days can an offender file a representation against an EPO? Option A 10 days, option B 15 days, option C 30 days, option D 7 days। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन B 15 days। अगला सवाल है, upon receiving a complaint of public nuisance, what is the first step for the enforcement officer? Option A arrest the offender, option B issue a fine, option C visit and inspect the site, option D seal the premises। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी विजिट एंड इंस्पेक्ट द साइट। किसी भी ऑफिसर को कोई कंप्लेन आती है पब्लिक न्यूसेंस की, तो फर्स्ट स्टेप वो क्या करेगा, वो विजिट करेगा और इंस्पेक्ट करेगा साइट को। उस हिसाब से अगर जो इशू ज़्यादा होगा तो ऑफेंडर को अरेस्ट कर लेगा, या फिर फाइन भी कर सकता है, या फिर प्रेमिसेस को सील भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होगा, विजिट करेगा साइट को। अगला सवाल है, द EPO must contain which of the following details? Option A offender's age only, option B directions to remove nuisance and possible penalty, option C only the penalty amount, option D date of the complaint only। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी डायरेक्शंस टू रिमूव न्यूसेंस एंड पॉसिबल पेनाल्टी। अगला सवाल है, what order does the enforcement officer issue if convinced of a public nuisance? Option A removal order, option B arrest warrant, option C emergency prohibition order, that is called EPO, option D fine notice। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी emergency prohibition order। अगला सवाल है, daily reports of the public nuisance actions must be submitted by the enforcement officer to? Option A the hearing officer, option B the board, option C the subdivisional enforcement officer, option D the chief minister। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी सबडिविजनल enforcement officer। डेली की जो भी रिपोर्ट्स होंगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, इन दोनों में से जो भी ऑफिसर साइट को विजिट करेगा या कोई भी रिपोर्ट होगी पब्लिक न्यूसेंस की, डेली की रिपोर्ट वो SDEO को सबमिट कराएगा। अगला सवाल है, एक्सेस प्रोसीड्स फ्रॉम ऑक्शन ऑफ enforcement costs are A kept by the authority, option B paid to the offender, option C donated to charity, option D used for other enforcement cases। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी paid to the offender। अगला सवाल है, seal premises under absolute order enforcement are decided upon by? Option A the government, option B the hearing officer, option C the board, option D the prosecutor। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी the hearing officer। अगला सवाल है हमारे पास, which is not an action under absolute order enforcement? Option A removal, option B recover fine, option C appoint commissioner, option D none of these। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन C appoint commissioner। अगला सवाल है, an absolute order contains option A detail of nuisance and further penalty, option B FIR number, option C vehicle registration, option D none of these। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन A detail of nuisance and further penalty। अगला सवाल है, who enforces an absolute order if the offender fails to comply? Option A hearing officer, option B subdivisional enforcement officer through enforcement officer, option C the board, option D any citizen। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन B subdivisional enforcement officer through enforcement officers। अगला सवाल है, who may convert an EPO into an absolute order? Option A board, option B enforcement officer, option C hearing officer, option D subdivisional enforcement officer। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी हेयरिंग ऑफिसर। हेयरिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो EPO को एब्सोल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकता है।
अगला सवाल है सीलिंग premises during encroachment enforcement is allowed under option A both movable and immovable encroachment provisions, option B only public nuisance, option C only movable encroachment, option D none of these। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए both movable and immovable encroachment provisions। अगला सवाल है डेली रिपोर्ट्स ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट एक्शंस आर सबमिटेड टू ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी हेयरिंग ऑफिसर, ऑप्शन सी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑप्शन डी द कोर्ट। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर दैट इज SDEO। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो डेली की रिपोर्ट्स होंगी पब्लिक न्यूसेंस की उसकी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो जाएंगी SDO के पास। सेम इसी तरह इमूवेबल इन्फोर्समेंट की भी जो डेली की रिपोर्ट्स होंगी वो SDEO को सबमिट होंगी। अगला सवाल है A removal order for encroachment is served. Option A through official means provided in the Act. Option B only verbally. Option C through newspaper ad only. Option D none of these। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन A through official means provided in the Act। अगला सवाल है If an offender neither complies with nor appeals, an EPO enforcement may include option A sealing premises, option B arrest, option B confiscation, option D all of these, all of the above। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन डी all of the above। अगला सवाल है Representation against EPO is filed before A board, B hearing officer, C subdivisional enforcement officer, D authority। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी हेयरिंग ऑफिसर। अगला सवाल है Who may determine rents in encroachment cases? Option A board, option B hearing officer, option C chief minister, option D magistrate। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी hearing officer। अगला सवाल है Whistleblower information can trigger option A public nuisance enforcement, option B encroachment removal, option C both, option D none of these। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी बोथ। अगला सवाल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 को इशुएंस एंड डिलीवरी नोटिस। फॉर पर्सनल सर्विस प्रूफ व्हाट फुटेज इज सफिशिएंट? ऑप्शन ए CCTV, ऑप्शन बी पब्लिक फोन, ऑप्शन सी बॉडी कैम, ऑप्शन डी ड्रोन कैमरा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी बॉडी कैम। अगला सवाल है इन सर्विसेज एट प्रीमिसेस इफ द ऑफेंडर इज द ओनर बट नॉट इन पोजेशन नोटिस इज सेंट टू ऑप्शन ए प्रॉपर्टी एड्रेस, ऑप्शन बी पुलिस स्टेशन, ऑप्शन सी लास्ट नाउन एड्रेस, ऑप्शन डी इन्फोर्समेंट स्टेशन। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी लास्ट नाउन एड्रेस। अगला सवाल है इफ द ऑफेंडर इज एन ऑक्युपाइंग ओनर और टेनेंट नोटिस इज सेंट टू ऑप्शन ए लास्ट नाउन एड्रेस, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी एड्रेस, ऑप्शन सी कोर्ट एड्रेस, ऑप्शन डी लोकल गवर्नमेंट ऑफिस। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी प्रॉपर्टी एड्रेस। अगला सवाल है affixing of notice must be done at option A nearest police station, option B conspicuous part of offender's house, option C enforcement station, option D court premises। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी conspicuous part of offender's house। अगला सवाल है when is affixing of notice used? Option A when personal and premises services are not possible, option B when the offender is absent for 1 day, option C on request of offender, option D at start of proceedings। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन ए when personal and premises services is not possible। अगला सवाल है for personal services the employee delivering must option A inform local police, option B certify service on duplicate of notice, option C call witness, option D take photograph only। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी certify service on duplicate of notice। अगला सवाल है refusal to receive notice, option A horse proceeding, option D does not affect proceeding, option C requires court order, option D requires second notice। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन डी B does not affect proceedings। अगला सवाल है if notice is of general nature for many persons in same locality which method is used? Option A public notice, option B local proclamation, option C affixing, option D courier service। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन बी लोकल प्रोक्लेमेशन। अगला सवाल है लोकल प्रोक्लेमेशन इज मेड थ्रू ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी सोशल मीडिया, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर इन लोकेलिटी, ऑप्शन डी पर्सनल डिलीवरी।
दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, लाउड स्पीकर इन लोकेलिटी। आखिरी सवाल है, पब्लिक नोटिस मस्ट बी पब्लिश्ड इन ऑप्शन ए, प्रोविंशियल डेली, ऑप्शन बी, लोकल इंग्लिश पेपर, ऑप्शन सी, नेशनल उर्दू न्यूज़पेपर, एंड ऑप्शन डी, गवर्नमेंट गैजेट। दुरुस्त जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी, नेशनल उर्दू न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।